Terrorism has no other manifestation. Terrorism is a pure evil which has to be exorcised from the body politic of this globe. But we will not and cannot tolerate terrorism which is being sponsored by Pakistan, now going back 45 years. भारत एक बहुत ही प्राचीन संस्कृति है। 5000 साल लंबा हमारा इतिहास है और भारत की ये परंपरा रही है कि उसने सदा अहिंसा और शांति में विश्वास किया। भारत एक ऐसा मुल्क है जिसने कभी किसी और मुल्क के ऊपर आक्रमण नहीं किया और भारत ने जब भी कहीं पर हस्तक्षेप किया है तो लोगों की जो इज्जत है, उनके जो मानवाधिकार हैं, उनकी हिफाजत करने के लिए हस्तक्षेप किया है। चाहे वो 1971 पूर्वी पाकिस्तान में हो जब बांग्लादेश की संरचना की गई थी। ये वो पृथ्वी है, ये वो धरती है जहां पे महात्मा गांधी जी ने अपनी रणनीति को सुरखरू किया था। अहिंसा से उन्होंने एक ऐसे साम्राज्यवाद को शिकस्त दी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि ब्रिटानिया लहरों पर राज करता है। द सन डजंट सेट इन द ब्रिटिश एम्पायर। और आज महात्मा गांधी जी की, नेल्सन मंडेला जी की इस धरती को मैं नमन करता हूं। हमारा यहां आने का उद्देश्य ये है कि सारी दुनिया को हम ये बताएं कि if the world has to grow, and if the world has to grow peacefully, and people have to progress, and they have to have a better life for themselves, their families, and for the generations to come, then violence cannot be a sequitur in that equation. Terrorism has no religion. Terrorism has no other manifestation. Terrorism is a pure evil which has to be exorcised from the body politic of this globe. And that is why after this horrific attack in Pahalgam, where 26 of our citizens were executed in cold blood, we are reaching out to the global community to create a global consensus against those nations which use terror as an instrument of state policy. India has always believed in a peaceful neighborhood. We continue to believe in a peaceful neighborhood, but we will not and cannot tolerate terrorism which is being sponsored by Pakistan, now going back 45 years. And therefore this multi-party delegation seeks to underscore that solidarity and would like to appeal to you to also reach out to all the people that you know around the world and help us in creating this international consensus whereby the world can grow peacefully and the dream of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family, can actually come true.